Nifty top stocks analysis, and today we'll also look at two additional stocks that have been suggested by my subscribers. So without any further ado, Nifty के daily chart पे जाते हैं and we can see कि EOD basis पे थोड़ा spinning top जैसा लग रहा है मेरे को. Obviously जो wicks है candle के वो उतने बड़े नहीं है to actually qualify as a spinning top, but we can see कि दोनों side के levels उसने test किए थे आज. एक और चीज जो मेरी नजर जाती है जिसकी तरफ, एंड दैट इज द RSI. We can see RSI is at 76. So generally, if you've been watching my videos, you know that I use RSI more of as a momentum tool. तो RSI 40-60 यूज करता हूँ मैं, बट if we look at the oversold and overbought side, then RSI is nearing 80, which is considered to be the overbought area. So purely based on that, I would not rule out more of a sideways movement, even if it is for a session or two, because बहुत बार ऐसा होता है कि निफ्टी थोड़ा ओवरहीटेड जैसा हो जाता है और उसके बाद थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम लेता है, एंड देन इट माइट कंटिन्यू इट्स रैली. सो बाय नो मीन्स एम आई सेइंग कि निफ्टी इज नॉट बुलिश. निफ्टी बहुत ज़्यादा ही बुलिश है, वी कांट डिनाई दैट, बट it is a possibility that it might just slow down. Obviously I might be completely wrong here, but it's important to consider that possibility. अगर हम लोग मूविंग एवरेजेस हटा देते हैं and we just keep the important levels here, then we can see this is the last level that I had shared with you. उसके बाद सिर्फ स्ट्रेट वर्टिकल क्लाइम हुआ है, सिर्फ आज बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट हुआ है. इनफैक्ट वी कैन सी हियर कि आज का पूरा दिन on a closing basis has been within the first hour's range, actually the second hour's range. ये पहला घंटा था, ये दूसरा घंटा था, और दूसरे घंटे के अंदर ही मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स हैव बीन देयर. सो दैट इज वेरी नैरो इन माय व्यू. इनफैक्ट अगर 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, इट माइट जस्ट गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन. Yeah, we can see that yeah, this is where the day started. ठीक है, दिन इधर से इधर किधर चालू हुआ, एंड दिस इज द कैंडल, दिस वन इज द कैंडल. और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर ही रहा है फॉर द मोस्ट पार्ट प्रीवियस क्लोज के ऊपर, यहाँ पे सपोर्ट लेके, बट इट वाज ओवरऑल वेरी साइडवेज. सो अनलेस ये वाले रिवर्सल जैसे पकड़ पाते, दैट वुड हैव बीन अ गुड ट्रेड. बट अपार्ट फ्रॉम दैट शायद मोमेंटम वाले ट्रेड्स जो आते हैं ट्रेंडिंग डेज पे, वो शायद आज नहीं मिल पाते. Obviously, just that is based on how I trade. Your trading mileage may vary. That's always the case. Now coming to Bank Nifty. Bank Nifty हम लोग देख सकते हैं कि actually निफ्टी का जो आर्ली चार्ट था वो कैसे एक बड़ा कैंडल था और उसके बाद वी सॉ सम साइडवेज कंसोलिडेशन. That is exactly what Bank Nifty is actually showing us. We can see it's right within this big candle only. So मेरे हिसाब से अगर 36,300 के ऊपर थोड़ा ब्रेकआउट जैसा होता है, then we can see a good movement happening. RSI on the daily chart is at 60, which is good. मतलब अच्छा मोमेंटम है एज कम्पेयर टू निफ्टी जो काफ़ी ओवरबॉट जोन के अंदर आ रहा है. ऑब्वियसली इट इज़ जस्ट इंडिकेटिव. मैं ऐसा नहीं बोल रहा RSI इज द गोल्डन सॉर्ट ऑफ इंडिकेटर, बट इट इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट वी कैन कंसिडर. I'll also do a separate video on RSI in fact, because I think बहुत लोग समझते नहीं है कि RSI exactly कैसे function करता है, and if we understand that, then I think एकदम ऐसा secret unlock हो जाता है RSI का, in my view. So yeah, I'll do a quick video on that as well sometime this week. But never mind, coming to Bank Nifty's hourly chart. ठीक है, जूम आउट करके मैंने ट्रेंड जैसा दिखा दिया आपको, अभी मैं जूम इन करके exact movements दिखा देता हूँ. And what we can see here is that this previous close level was actually a resistance. So Nifty actually positive close हुआ था. Bank Nifty has not managed to close positive, which is not a very good sign. But good thing is 36,000 के ऊपर है. So yesterday, in fact, Thursday को yesterday नहीं, we discussed how 36,000 close is very important. Today also that's the case. 50 MA के ऊपर है, 35,800 के ऊपर है. मेरे weekly analysis अनुष के साथ मैंने बोला था कि 35,800 is a very important level. If it's able to hold on to that level, then well and good. अगर hold on नहीं कर पाता, then I think problems might just start. But apart from that, this is what we're seeing. ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई के उतना दूर भी नहीं रहा पहले जो इधर था. अभी वी ऑलमोस्ट गेन अराउंड 2,000 पॉइंट्स ऑन दैट. सो यहाँ पे जब ये कंसोलिडेट कर रहा था, वी ऑलमोस्ट गेन 1,500, नॉट 2,000 पॉइंट्स. So that is also good. Now coming to the top stocks, and the other stocks, by the way, I will be talking about in some time after I'm done with the top stocks. टॉप स्टॉक्स देखते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली 50 MA हैड बीन क्लियर्ड ऑन फ्राइडे, एंड देन वी सॉ गुड सपोर्ट बीइंग टेकन फ्रॉम दैट लेवल. हम लोग ने बात किया था कि 2125 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, एंड today's low is right around that mark, 2128. So just 3 points away.
एंड 2150 का एक इंपॉर्टेंट जोन रहता है रिलायंस में. वी कैन सी दिस इज वेयर इट एक्चुअली टर्न बैक फ्रॉम एंड it has been able to clear that level also. Daily RSI, not monthly RSI. Daily RSI is the highest that we've seen in the past 1.5 month or so, which is also, I think, a very good sign. So let's see if it's actually held. देखते हैं कैसा चलता है. Next stock we're looking at is HDFC Bank, which is actually right at resistance. 1530 का जो level है that we've been talking about, it is right at 1530. Let's see, it's actually just above the line that I've made, but it's at that level. So let's see कल क्या होता है actually. Banks overall, even though underperform किया आज, they do look relatively better in terms of कितना potential है compared to Nifty. Nifty थोड़ा momentum पे है. Banks possibly catch up पे भी आ सकते हैं. नेक्स्ट स्टॉक we're looking at is Infosys. Infosys ने उतना खास कैंडल नहीं फॉर्म किया है, आई वुड से, स्पेशली आफ्टर द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी दैट वीव सीन. दिस कैन बी इंटरप्रेटेड इन टू वेज. एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि मोमेंटम थोड़ा वेयर ऑफ हो गया है, दूसरे तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जिसने बाई किया होगा वो फाइनली प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, पर वो प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी सिर्फ आधा टका ही नीचे गया है, विच इज एक्चुअली अ गुड साइन. इट शोज सम बाइंग हैपनिंग that is actually being able to absorb all these sell orders. So I think दो तरह से देख सकते हैं. Personally speaking, I think the very fact कि वो थोड़ा भी होल्ड कर पाया ग्राउंड को इज अ गुड साइन. थोड़ा सा करेक्शन आने ही वाला है प्रॉफिट बुकिंग का. सो लेट्स सी हाउ इन्फोसिस डज. नेक्स्ट स्टॉक इज HDFC. HDFC देख सकते हैं 2620 से इट्स बिन एक्चुअली अ प्रीटी नाइस राइड एंड इट्स नाउ अबव 2700. अगेन वी कैन सी, अगर मैं जूम आउट करता हूँ तो दीज आर pretty good levels. In fact, it is very, very close to the all-time high now, 2900 ka. So let's see how that goes. Next stock is ICICI Bank, and ICICI Bank is actually showing us a similar candle as Infosys, gap down open और doji टाइप है. सो थोड़ा इंडिसाइसिवनेस हो सकता है, बट एज लॉन्ग एज आई थिंक फर्स्ट ये गैप का सपोर्ट रहेगा 700 का. 700 साइक लेवल भी है. सो लेट्स सी इफ दैट इज हेल्ड. अगर वो तोड़ता है देन आई वुड नॉट रूल आउट 692 इश लेवल्स. उसके बाद आता है 684 686 के बीच का, एंड देन वी हैव 679. नेक्स्ट स्टॉक दैट वी आर लुकिंग एट इज कोटक बैंक. कोटक बैंक भी एक इनडिसाइसिव दे रहा है. बेसिकली टू समराइज व्हाट वी हैव सीन अप टिल सो फार, हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी इनडिसाइसिव क्लोजेस दिए हैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स ने. सो पॉसिबली जो मोमेंटम वेयर ऑफ हो रहा है दैट माइट बी मोर इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइकोलॉजी, जिससे सब लोग को लग रहा है कि ओके पॉसिबली टाइम टू बुक प्रॉफिट्स. Maybe that is what is actually driving this. Remember, price to move hota hai, we can see the price, but we need to try to dig up the emotions and the real meaning, the hidden meaning behind that price. That is what will actually help us understand the cause behind these price movements. So फिलहाल देख सकते हैं कि डोजी क्लोज हुआ है 1780 पे. क्लोज होना is very important. 1780 is actually a resistance. But let's see, 1800 is not too far away for Kotak Bank. ओवरऑल दो थोड़ा सा बीटन डाउन दिख रहा है मेरे हिसाब से. SBI, we can see here it actually took resistance from its 50 moving average and 20 moving average, और वो 435 का जो लेवल था that has become a resistance. We saw price making a high of 434. So this is what it's looking like. Again, 420 अगर hold करता है, I think it's good enough. Next stock that we're looking at is Axis Bank. Axis Bank में हम लोग देख सकते हैं कि it's holding fairly well, but वो फिर flat movement है. It's not really going anywhere, neither up nor down. I think 50 MA के ऊपर जब consolidate करता है, many times the stock actually does very well. So I think it could shape up to be an interesting pick. बट अगेन 20 पॉइंट के अंदर ही शायद पहला रेजिस्टेंस आ सकता है, विच माइट बी अ लिटिल ट्रिकी टू नेविगेट. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्टॉक दैट वाज suggested by a subscriber, we'll look at Britannia Industries, and they basically asked ki could this potentially be a reversal of sorts. So see, Britannia का मैंने actually ये flag pattern जैसा पहले बनाया था, and what we can see here is कि even though 200 और 50 MA का अच्छा bounce दिख रहा है हम लोग को 2 टके का, and we can see it's actually actually a good sort of close because it's above this high. I'm not sure, I can't find the drawing tools on my browser, but it's above this high, which is a good sign. But ये जो parallel channel है, that is approaching. So if I just extend this line, and I'll show you how to, you go to settings and you do extend right line, then we can see that this channel resistance is coming up. So around 3700 ish is where I expect
Britannia to sort of start moving, running out of steam. We can see this level also is right around that mark. So I think even though it looks good, जो अगर हम लोग रिवर्सल टाइप का ट्रेड देखते, दैट शुड हैव बीन आइड, और in my view that would have been somewhere around here at 3400 3450ish levels. In fact, I have a holding of Britannia which I had added at some similar levels around here, purely because risk reward makes better sense to me at that point. Obviously, I might be wrong. ये तोड़ भी सकता है, but as of now, until and unless it actually does not break, I'm not quite sure. 50 और 200 MA के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं. But again, there are various ways to sort of interpret how Britannia might move. Next stock is actually Hdfc Amc. And this is very interesting. We can see 200 MA bounce is happening, 50 MA और 200 MA के बीच में sandwich जैसा हो गया है. And if we remove the moving averages just to understand how the price has been going, then we can see something similar. कि अच्छा स्ट्रॉन्ग अप मूव आया, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, जस्ट लाइक ब्रिटानिया. But in this case, it's actually trying to cross that 2900-ish level. So मेरे हिसाब से HDFC AMC also looks pretty decent right now. But again, I think many of these AMCs and asset management companies are sort of in a fix. So let's see if it's actually able to hold on to its ground. But yeah, I mean, by the way, if you're curious about how to draw these fib extensions, I have a dedicated video on that. Make sure you just check my channel and you'll find it. That's it for this one. See you the next time. Happy trading.